मैं इसको चाहूँगा जितना इंटरेक्टिव हो, जितना आपको बीच में सवाल आए आप उसको पूछिएगा, क्योंकि ऐसा कोई मैं एक सिलेबस लेके नहीं आया हूँ. आई विल ऑल टेल यू बेस्ड ऑन माई experiences in the last 7 to 8 years and my knowledge which has evolved in the last 7 to 8 years on this entire thing. So you know, like as आप सभी लोग पब्लिक लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में जुड़ेंगे और किसी ना किसी फॉर्म में आप पब्लिक लाइफ के अंदर रहेंगे, तो आज के एरा के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट perception is more important than reality, and perception is in fact the most important thing. आप सोचेंगे कि सच की लड़ाई है, बट आज की तारीख के अंदर जो सब कुछ मैटर करता है कि आप एक्चुअली में कौन है पब्लिक लाइफ में, दैट इज नॉट ऑफ, वो मैटर नहीं करता है. आपके बारे में लोग परसीव क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है, और इसी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं नैरेटिव्स का. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइक व्हाट डू यू एग्जैक्टली रेफर बाय नैरेटिव? ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा, समझा होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली नैरेटिव फॉर यू, मतलब आपके लिए नैरेटिव क्या? आप लोग जो एनीथिंग विच यू वांट टू कम्स टू योर माइंड. सॉरी, स्टोरी बिहाइंड एन एक्शन. ओके, और आप में से किसी स्टोरी बिहाइंड एन एक्शन. ओके, आप में से और किसी को किसी के पास कुछ, व्हाट एग्जैक्टली इज नैरेटिव? आप क्या समझते हैं नैरेटिव से? व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड बाय नैरेटिव? जी, सो यू सेइंग इट्स द परसेप्शन व्हिच इज देयर. सो नैरेटिव इज द परसेप्शन जो आप बनाते हैं. और किसी को कुछ इसमें ऐड करना है? करेक्ट, सो करेक्ट, सो बियॉन्ड व्हाट वी सी. करेक्ट, बियॉन्ड व्हाट we see. Okay. Manipulation. So you're saying that narrative has an element of manipulation. Correct. Okay. Any? Outcome which is there. So outcome on the viewer's mind. Anybody else? जी. हम दुनिया को कैसे देखते हैं? हम दुनिया को कैसे देखते हैं? Okay. मेरे हिसाब से यू नो जो आपने बात किया, दिस इन्वॉल्व्स नैरेटिव के बिट्स एंड पीसेस, इट इन्वॉल्व नैरेटिव के इंग्रेडिएंट्स में. मैं, मेरे मित्र ने जो आखिरी में किया कि हम दुनिया को कैसे देखना चाहते हैं, से ज़्यादा मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा. मैंने ये महसूस किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने बहुत करीब से देखा है. नैरेटिव्स बेसिकली इज व्हाट डू यू वांट द वर्ल्ड टू थिंक अबाउट यू और योर प्रोडक्ट और योर पब्लिक इमेज. What does the world want to think about you? What does the world want to perceive you like? So if the world wants to perceive you as an angry young man, or if the world wants to perceive you as a leader who is working 24/7 for the country and giving up every private life, nothing, always only working for the country, or if the world wants to perceive you as a cool leader, you know, who's completely transformed, who's trying to understand people's opinion, what does the world want to perceive you as? And whether ultimately what the world wants to perceive you as, how successful you are in order to communicate that, decides whether the narrative has actually become successful or not. So narrative is not information, narrative is not knowledge. Narrative is mass perception about you. It can also be mass perception about you which involves elements of falsehood, elements of truth, elements of negativity, elements of positivity, and narrative about you cannot be static. Narratives generally are evolving perceptions that people have about you. So it is not a static information commodity. It is there. It is a dynamic perception which keeps on traveling with time, which keeps on changing with time, and where there are more variables which are attached with it, and your perception, your narrative will always be at war with your opponent's narrative in public life.
whether your narrative succeeds or your opponent's narrative succeeds, that will decide actually what is the narrative about, what is your narrative. So when I say what is your narrative is only not dependent on you. Your narrative is also dependent on how you counter your narrative spread by your opponent, by your rival in public life. So when I say narrative closest comes to the word perception, but it is not a perception between two individuals. It is a perception which the people have about you. And it also depends on what the perception your opponent is spreading about you and how you are able to counter that perception that your opponent is spreading about you. That is what cumulatively decides your narrative amongst the voters, amongst the public, amongst the viewers. This is what I would say I look at narrative. So narrative, if you go and common man को बोलो कि भैया पान की दुकान पे आदमी क्या सोच रहा है आपके बारे में, वो एक narrative हो सकता है. That is a narrative in the voters. What the intelligentsia thinks about you, that's a different narrative in the intelligentsia. So narrative is always a commodity which is in more than one individual. It has to be in a group. Now when I talk about narrative, I talk about narrative in a group, in more than one people. So say my media colleagues have a narrative about me which is XYZ. That might be because of certain reason. But the viewers have a lot of big narrative about me or have a completely different narrative about me. So say for example, hypothetically, giving you an example, say when we did the Sushant Singh Rajput case, when we stood for justice Sushant Singh Rajput, everybody on the road used to come to me, Mr. Goswami, when he was there, and everybody used to support it. But that was completely rejected by a lot of people in the media, right, at that time. So the narrative for them was something else, the narrative for the people on the ground was something else. So again, narrative is not, it depends on who you are addressing to. So say for example, Prime Minister Narendra Modi's narrative in the people of India is he is a man who's taking the country forward. That is a narrative which is there in the people of the country. There can be multitude reasons for people forming that narrative. A narrative cannot have a comma, a narrative cannot have a but, a narrative has to be one emotion. A narrative cannot have multitude of emotions in it. If it has multitude of emotions in it, then your narrative has failed. That is something which is very, very important. So say Rahul Gandhi is trying to change his narrative, his team is trying to change his narrative, if you observe in the past many months, from a leader who was perceived as not sincere to a leader they are trying to change the narrative as a leader who's connected to the ground, who's listening to the ground. So there is a change in the narrative that his team is trying to portray as. So this is where you have to understand narrative too. Narratives per se, if you ask a common man on the ground, for them narrative is not even a word in the dictionary. Narrative comes as a word in the dictionary for individuals who are in public life, who are to do with knowledge, not knowledge but who are to do with perceptions, who are to do with perception management, who are to do with communication nature. So when an editor of a TV channel, of a digital channel, of a YouTube channel, of a social media channel sits and says and makes a video, the information among everybody you must be seeing, say that this the India-Canada row you are seeing across in the media, right? Now everybody would give the same piece of information, but it is about what editorial angle an individual takes. That editorial angle is dependent on what narrative he wants the people to know. So if I say that there is a foreign power behind Niger's killing, I am giving an example, that is my narrative. So that is a narrative which I want the people to take. So you need to be clear in the mind what perception or what message you want to give to the viewer or to the voter or to the public at large. That precisely is the narrative. It is not information. It is not facts. It is not, a sentence in but, if, ought. How am I perceived at large is narrative. What's the closest Hindi word for narrative? दृष्टिकोण is more viewpoint. So आपके हिसाब से हिंदी की कौन सी शब्दावली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि हिंदी की कौन सी शब्दावली है जो इसके सबसे करीब आती है? विमर्श is more discussion, if I am wrong. So I don't think विमर्श comes. Anything else? विमर्श मेरे हिसाब से अगर हिंदी में बोलूं तो आपके बारे में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं,
सीधी भाषा में बोलूं तो लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, आपके बारे में क्या चर्चा चल रही है, वो इंपॉर्टेंट है। आपके बारे में अगर कोई बात कर रहा है, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। तो उस तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो चर्चा आपके बारे में क्या चल रही है, कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि अल्टीमेटली वो आपके बारे में सोचता क्या है, पब्लिक एट मार्च सोचती क्या है आपके बारे में। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो चर्चा इज अ प्रोसेस। अल्टीमेटली चर्चा के आखिरी में कोई कंक्लूजन निकलेगा, वो उसकी सोच होगी, राइट। वो मान लो पॉपुलस की सोच होगी, वो इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नैरेटिव व्हिच इज देयर। सो चर्चा, अगेन ही राइटली सेड दैट चर्चा इज अ प्रोसेस। चर्चा समथिंग इज चल रही है, उसके एंड में कुछ एक सोच, आप एक निर्णय पे पहुंचते हो कि यार ये आदमी ना खराब इंस्टीट्यूट के लिए, यार ये आदमी ना अच्छा है इंस्टीट्यूट के लिए, ये ना मेहनत करता है 24 घंटे जनता के लिए, ये ना यार मेहनत नहीं करता है जनता के लिए, यार ये ना झूठ बोलता है, ये ना सच बोलता है, ये एक्स करता है, वाई करता है। वो जो कंक्लूजन है वो आपकी अल्टीमेटली सोच बनती है और वो कभी भी स्टैटिक नहीं होती। तो इंफॉर्मेशन और नैरेटिव के बीच में जो मैं फर्क समझता हूं वो यही है कि एक इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपने बोला कि भाई इंफॉर्मेशन में कोई इमोशन नहीं होता, नैरेटिव में इमोशन होता है, और अगर नैरेटिव में इमोशन नहीं है तो आपका नैरेटिव किल्ड है, खराब है, गलत है, नैरेटिव ही नहीं है। बोलिए सर, जर्नलिज्म में कई लोग मानते हैं, मैंने काफी प्रोफेसर से सुना है कि बेसिकली एक जर्नलिस्ट का काम होता है इंफॉर्मेशन देना rather देन प्रोड्यूसिंग अ नैरेटिव। अगर जर्नलिस्ट कर रहा है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से भी कर रहा हो, लेकिन ही इज सीन एज अ बायस्ड पर्सन। तो नैरेटिव विल हैव एलिमेंट ऑफ बायस। तो अगर आप कह रहे हैं जर्नलिस्ट का काम इंफॉर्मेशन, आज इंफॉर्मेशन से ही नैरेटिव, बिना इंफॉर्मेशन देके आप नैरेटिव कंक्लूड नहीं कर सकते। सो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान के अंदर जाके, मैंने इंफॉर्मेशन दी, और अगर मैंने बोला भारत ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करी और पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया, और इससे हमारी सेना के शौर्य के बारे में आप समझ सकते हैं, और इससे समझ में आता है कि कौन असली में ताकतवर मुल्क है। मैं अपनी ओपिनियन बीच में दे रहा हूं, मुझे अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी तो मैं बोल दूंगा कि इतने लोग, इतने आतंकवादी मारे गए, तो उसमें कोई इमोशन चीज नहीं है करके। वो तो न्यूज, वो तो रीड कर रहे हो आप, वो तो सिर्फ फैक्ट पढ़ रहे हो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू, सो देयर इज अ, आई डोंट बिलीव दैट द जॉब ऑफ द जर्नलिस्ट इज ओनली टू गिव इंफॉर्मेशन। द जॉब ऑफ द जर्नलिस्ट इज based on that information, what is the opinion that he wants to, he has, that has to come out, because बिना ओपिनियन के एक न्यूज रीडर में और एक जर्नलिस्ट में कोई फर्क नहीं। आज लोग ओपिनियन सुनना चाहते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स हर जगह, अगर मुझे करना है तो मैं एक रोबोट को डाल दूं, एआई रोबोट को डाल दूं जैसा लोग डाल रहे हैं, उसी से इंफॉर्मेशन सुन लूं मैं। मुझे प्रदीप भंडारी एक्स वाई जेड ए जेड की क्या जरूरत है, क्योंकि एक एक्सपर्ट की क्या जरूरत है। आपको अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों हो, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में क्यों हो, वहां पे इंफॉर्मेशन तो पूरे विकिपीडिया पे अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक्स पे अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रोफेसर के एक्सपीरियंस से, उसके एक्सपीरियंस से, उसकी इन डेप्थ नॉलेज से, उसके नुएंसेस से सीखना चाहते हैं। दैट इज वेयर इट कम्स। उससे आप अपनी एक थॉट प्रोसेस को शेप करना चाहते हैं, आप आपस में एक दूसरे से सीखना चाहते हैं और एक थॉट प्रोसेस को शेप करना चाहते हैं। दिस इज वाई यू कम, राइट। सो सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट जर्नलिज्म पर से, आई डू बिलीव दैट इंफॉर्मेशन, इट्स द रोल ऑफ द जर्नलिस्ट इज नॉट गिविंग मेयर इंफॉर्मेशन। सो से फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि भाई अगर देश के अंदर कोई गलत घटना होती है और उस गलत घटना के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता उसके लिए जिम्मेदार होता है, तो अगर मुझे पता है कि फैक्ट्स ये पॉइंट करते हैं कि वो जिम्मेदार उसके लिए है, तो अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर मैं अपना कर्तव्य नहीं कर रहा हूं। सो आई बिलीव दैट टेकिंग एन ओपिनियन रिक्वायर्स करेज and you have to, or requires conviction, and if you don't have either the courage or the conviction, then you are not in the business of opinions or in the business of journalism. You are only in the business of reading news or reading things. Is this Yeah, a narrative that journalists have built about themselves? this is actually the issue. Was this is always what journalists used to do. They used to think that particularly those in the extreme left, having a left of center ideology, they used to bracket themselves as neutral, but they always had an opinion, they always had a worldview, they always had a way of looking at things. And sometimes where I tell you it goes wrong, if your facts are telling you something else, there are two ways of looking at it. If I come in this classroom, or if I say, or if I have made an opinion, imagine that if a person has made an opinion that India is not progressing, imagine that person has made an opinion. Now even if the GDP figures
point that the growth rate is increasing. Imagine, I am giving you a hypothetical example. Even if all the World Bank indicators, IMF and all agencies indicators point that, that India is moving forward, even all the economic indicators point that the country is moving forward, and still if you are not able to change your opinion, then which means that that is not what I call as real journalism, or this is where you go wrong with your dharma. So what I am saying is everybody will have an opinion, but you need to know that your opinions should be based on facts. You should base an opinion, you should have an opinion based on facts. Your interpretation of facts can be any. That is your ultimately social conditioning. But you can't say, अगर मैंने पहले से ही सोच लिया कि ये आदमी चोर है या ये करप्ट है, इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर मैंने सोच लिया पहले से कि ये करप्ट है, तो फिर मैं उसमें कर ही क्या रहा हूं? That is where it goes wrong. So journalists who know the outcome of their story before going into the investigation of the facts of the story, that is where they go wrong. You need to investigate, you need to have facts, you need to have prima facie evidences in front of you. That is when you can conclude. So say if I am saying that opposition unity is not existing, when I see two parties of the opposition say fighting in two states, they're not coming to a seat sharing formula, and this is where I say opposition unity, I'm giving you an example, is a joke. So I form an opinion, I form a narrative based on certain things to back me. This is how it is there. But if I have nothing to back me, there is no input, and I already have the output first, and then I decide the input, that is where I say it is wrong. So it seems like you are talking about how narrative is actually a form of rationalization. Yes. Narrative has to be a form of rationalization. Narrative has to be formed, but narratives again depends. Now narratives can be extremes in nature. So if you see the US election, what was Donald Trump's narrative when he became the president? He projected himself as getting America back to the golden glory days. Now if you see all the Republican presidential debates, even where Vivek Ramaswamy to others are saying, they're saying we will get the US primacy back in the global geopolitics. We will not let it completely give away all its economic, defense, geopolitical might to say China. That is a narrative that they're trying to build. So narratives can also be extremes in nature. Generally what I have seen in public life, narratives which are midway, which are not communicating one clear message, have always failed. So you cannot think of you cannot think generally. For example, in any country across the world, nobody has got 100% votes. People have won max with in India with 39, 40, 45%. That's how it is there. Even in a constituency that an MP or an MLA wins, imagine there are 1 lakh voters. All the 1 lakh voters do not vote you. So if you think that your narrative will have everybody as the buyer of that narrative or everybody agreeing to that narrative, it is not possible. Please forget that. It is logically not possible. आप अपने घर के अंदर 5 लोग अगर रह रहे हो, तो उसमें ये भी गारंटी नहीं है कि अगर आपका 5 का ब्लड रेशियो, तो पांचों के पांचों हमेशा आपके पिताजी, माताजी, भाई, बहन सब आपस में खुश होंगे. So this is I am talking about, you were talking about a larger audience in nature, or larger viewer in nature. So this is a basic acceptance that you cannot, whatever, how much wholesome your narrative is, how much utilitarian your narrative is, how much quote unquote inclusive your narrative is, there will be difference of opinion, and there will be individuals who will disagree with your narrative. Ultimately, in whether it is media, public life, it is about who you are addressing that narrative to and how many buyers are there to that narrative. So you had a question. Sir, ये तो completely agree. Dharma वाला point safe हाँ. है, so it's literally perfect. But sometimes, for example, recently we have example of NDTV. वो उनके अकॉर्डिंग वो सही धर्मा पहले कर रहे थे, then after when Adani purchased it, एकदम से suddenly, कई बार आपको नहीं लगता कि मनी के बेसिस पे आपका धर्म 100% 200% होता है लोग का. यही तो मैं चीज कहता हूँ, 100% होता है. मनी पे धर्म नहीं. आज वो बोलेगा कि दिन है, अगर आप कई लोगों को दो दोगे पैसे तो बोलेगा दिन भी चल रहा है, तो उसे बोलेगा नहीं मुझे तो ये दिन दिख रहा है पर इसमें कहीं ना रात होने वाली है. तो मान लो अगर आपको नैरेटिव बताता हूं, आपने बोला मनी प्ले करता है रोल. सो से दैट आप सुबह गहरी सुबह में हो और सुबह 9 बजे का समय, और आप जनरली हर आदमी बोल रहा है कि सुबह है यार, सूरज जो है बहुत गर्मी हो रही है, आप सूर्य भगवान को देख रहे हो. अब दूसरे व्यक्ति को जिसने मान लो पैसे दिया और उसको बोला गया दूसरा चलाओ एग्जाम्पल, तो क्या बोलेगा,
नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये सूर्य अब अस्त होने में इतना समय ही बचा हुआ है और धीरे 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 अभी 9 बज रही है शाम के, इन द नेक्स्ट 9 आवर्स रात होने वाली है। तो वो नैरेटिव चलाएगा, मान लो उसने हेडलाइन दे दी रात होने वाली है, उसने पूरा डाला कि कैसे रात होने वाली है और आखिरी में उसने लिख दिया बायलाइन में कि भाई हाँ अभी 9 घंटे बचे। कौन पढ़ेगा कि 9 घंटे उठा के चीज बचे, राइट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट सो yes, if you ask me genuinely, do people sell their soul for money? Yes, they do. It is hype, which is completely there. And I don't blame, I don't see, if you are running a professional organization, if you are running a business organization, it is ultimately who is running that organization, who has the majority stake, and he has a right to decide what the organization should go forward to, because he's put the money, he's taken the risk, and he's employed you. If you have issues, please go ahead and do your stuff. It is as simple as that. If somebody is running a political party, it's the decision of the political party. It is their decision to run it the way they want. The laurels are there. The laurels are also there. The problem, even if they have defeats, the defeats are also there. So what I'm saying is, you should always know who, for example, that in what position you are in order to influence the narrative. This is where I come to the second thing, that either narratives are made either narratives are influenced, so either narratives are created, either narratives are influenced, or neither narratives are demolished. Now, who creates the narrative? No one person can create the narrative. Narrative is always created by an ecosystem. Or narrative is also generally demolished also by quote unquote an ecosystem. It is influenced by individuals. So say for example, I'll give you a simple example. If you must have, हाँ बोलिए. So I have a question. These individuals who create the narrative. So if the narrative fails and the people who perceive it to be true find out that these individuals are not, they are not clean. So there's a trust factor, and the next time they don't trust you. Yes, 100% yes. The best part, for generally I look at things is that if you believe in certain things, so say for example, I believe that Sanatan is the core of this country. I believe in certain things. I should be very clear with my viewer and my audience. Those whose credibility are demolished, who appear to be neutral, but are running an agenda which is completely biased in nature. I believe nobody can be perfectly neutral. जब बच्चा पैदा होता है और जब वो बच्चा पैदा होने के बाद में अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे कौन सी चॉकलेट खानी है, ये ए या बी, उसी में उसका बायस आ जाता है। आप दोनों लोग हो किसी चीज में, जब चॉइसेस आदमी के पास आती तो बायस आता ही है। आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आप झूठ ना बोलो, यू शुड नॉट लाई। दिस इज व्हाट आई दिस इज वेयर यू कैन, इफ योर धर्मा शुड नॉट बी टू लाई. This is very, very important, particularly as a journalist. If you are talking about, you should not lie. You can have an angle. You can have an angle to a story, but you should not lie. And I'll give you an example. You said of this part of narrative created, influenced, and demolished. You saw the heinous rape, which you must have heard about this news on the heinous rape which happened in Ujjain. Now, after that, you saw a cartoonist in one of the very prominent newspapers. That cartoonist used that to target the entire Hindu community there by posting a cartoon which was mocking the Hindu tradition. Now in this, why did people, so he tried to influence the narrative. He's an individual. He tried to influence the narrative, correct? But he was weak on facts, because the person who saved that girl or helped that girl was a priest or an acharya, as per the facts which have come out in the media. He was very weak on facts. People in social media got cognizant of the facts. They questioned his narrative based on facts, and his narrative was demolished. So he tried to influence and his narrative was demolished. Now imagine, where is the narrative created or demolished? Why do I say that it is created by a group of people? For example, that there is a media institution or there is a political party
or there is an institution, say let us any institution which is there. Now that institution let's say there's a political party X which levels a charge of corruption on a leader Y of another political party, and after that political party does a press conference of say leveling a charge of corruption on a leader X, definitely I'm not pointing at Shobit, of a leader X, they release facts in the media, they call that leader corrupt, the media picks it up, there are debates which take place on it, social media trends happen on it, people start to question on it, so there is a narrative which is created. Individuals who have opinion on it, they influence that narrative. Then imagine that these facts become very weak. So who will these facts become very weak? So it will first be influenced by the other side, obviously leaders from the other political party. Then it will be appropriated and a PC will be done by that respected political party, and they'll try to demolish that respected narrative. So what I'm trying to say is generally narratives are created by, again, the generation of narrative can happen by an individual, but creation of narrative cannot just be by one singular individual. Again, depends what that individual's stature is. So say for example, and again it also depends on a lot of factors. So if you remember during say for example before when the world was grappling with COVID, there was this whole narrative that how India's COVID management had failed completely, and from likes of New York Times to Washington Post to everybody was putting this one picture of a lot of dead bodies and how India's COVID mismanagement has failed. So there was a creation of a narrative. There was a creation of a narrative by one entity, which was again newspaper, which is there, and then it was picked up by groups of individuals that escalated and actually created that narrative. So there was a generation of narrative, there was a creation of narrative, and then eventually how did that narrative got demolished is when the people of India in the Uttar Pradesh elections, because the center point of that was UP, completely gave a mandate which was contrary to what they were saying, and on the ground if you had traveled, people were saying that we got ration, we got saved, we really got help, and that narrative was demolished. So sometimes mandate of the people in elections in a democracy play a very, very important role in fact checking fake narratives. Otherwise, what generally happens is, and this is why I say this is the best part which an election does to in this country, particularly in a country like India, where there are so many international lobbies which are in place in order to, propagate false narratives, propagate misinformation. The only way in which it can be challenged fully is by the people. So Rafale was a narrative which was spread. Whether it was correct or wrong, that could only be known when the mandate of 2019 came and people voted the way they voted. The narrative of emergency which Indira Gandhi tried to sell as a necessity for the people of the country back in the 1970s was completely demolished when the election after emergency she lost. So what I am trying to indicate at, the biggest check of narrative is the people of the country, particularly when the narrative is spread against the government or for the government. This is why you need elections, or you need some or the other tool which tell the people in power of either side that what exactly are people thinking. And this people of the country ensure, fact check, demolish any international lobby which tries to build on a fake narrative which is there. Again, there is no narrative which can permanently be dead or there can never be a situation where any narrative can be permanently dead. So say a narrative which does not have a utility today might have a utility after 10 years. This is why you see I'll give you an example. So say when the government got a bill to abolish triple talaq, oral triple talaq, why could the Congress party at that time, the opposition party, why was it even Stevens with the government but not able to win that narrative? Is because it always had the Shah Banu movement coming back to haunt it. It was not, the Shah Banu movement was not there in the media.
largely from 2004 to 2014 because the Congress party was in power and it had more chance to control the narrative. Now it was in opposition, so there were more facts which could come out. So the narrative which was there in the 80s completely disappeared for 15 to 20 years, and it again started. It came up in 2000 after somewhere in 2007, post 2017. So no narrative can permanently be dead, particularly in public life. So when you enter public life, you need to know that there are certain narratives which can never be dead. Their utility might not work that much, but they can never be dead. So say for example, a voter of 18-year-old voter, for that 18-year-old voter, what happened in 1984, they may not be able to relate. So for them, the narrative is what is happening at present, what they have seen. But for a person who is, say, lived 84, for them that narrative will be very, very prominent and they would relate to that narrative. This is where I say that as you grow, as an old voter grows older, as an individual grows older, because they have seen so much in life, they have seen every individual who's coming into, who's governed, been in public life, they are able to make a more rational choice. Whereas a young voter will always be driven by hope, aspiration, and what more, that's why if you see that generally quote unquote change which takes place happens more through the younger voter. The older guys are more rationalist and they form their opinion after a lot of logic and facts. So for a narrative to be, so generally a newer narrative, whether it has a buyer, has a taker or does not have a taker, there is a more chances for somebody of an 18-year-old or 19-year-old to buy that narrative or reject that narrative. But say somebody who's a 55-year-old or a 50-year-old or a 40-year-old will buy that narrative or take that narrative based on certain other factors also. So why could Samajwadi Party in Uttar Pradesh, not win at all in this election? Or why the Congress in the last two elections was not been able to do significantly well? Because there was a large chunk of voter in this country which had seen 10 years of the Congress, and when they compared it with the 10 years of Modi government, they could see a difference which was there. Now why is the Congress trying to evolve itself? Because there is a large chunk of voter which has not seen 2004 to 14 but has seen from 14 to 24, and that first time voters actually seen 14 to 24. They might not be related to 2004 or to 1990s. So for them, there can be a possibility where both the parties have to have an even Steven narratives, and it is ultimately who convinces the voter more. So this is where I come to this is why no political party or no political entity per se can permanently be washed out from the politics or can permanently remain, which is there. It depends on a lot of multitude of factors because it's a dynamic, it is ultimately dynamic in nature. So if say for example, early 1990s was a politics which was dominated where Mayawati played the prominent role in Uttar Pradesh because the identity of a pichda was a very significant thing which related to the people. Now, post 14, the same social group people got a lot of tangible benefits in their life, whether it is house, whether it is toilet, and the person who had that vote, had that loyal vote, she could not evolve her narrative with time, so she kept the base vote, but the floating voter moved and joined another party. So narratives ultimately evolve by not base loyal voters. आप कैसे लोगों को मिल जाओगे जो 1970 में भी कांग्रेस को वोट कर रहा था, आज भी कर रहा होगा, जो 2000 जो मान लो 1980 के लेट 80 के दशक में बीजेपी वोट कर रहा हो, आज भी कर रहा होगा. वो जो फ्लोटिंग वोटर है वो क्या निर्धारित करता है? वो पब्लिक लाइफ का नैरेटिव डिजाइन करता है. 2009 में, 2014 में, 2019 में तीनों इलेक्शंस में कांग्रेस को जो वोट मिला वो 10 करोड़ से 11 करोड़ के बीच में मिला. उसका वोट ज्यादा डिप नहीं हुआ. बट बीजेपी को जो वोट मिला वो 7 करोड़ से बढ़ के 2009 में
वो 22 करोड़ हो गया 2019 के अंदर। मतलब जो पूरा फ्लोटिंग वोट और नया वोट आया उसको ज्यादा ये एड्रेस कर पाए। दैट इज वाई इनका जो नैरेटिव इन लोग का था वो ज्यादा चला। दैट इज हाउ चेंज नैरेटिव में टेक हुआ। और आगे चल के जो नैरेटिव अलग, अब नैरेटिव ज्योग्राफी बेसिस पे भी होता है। सो से फॉर एग्जांपल इन दिल्ली the Delhi government could repeat twice or thrice, and the BJP or the Congress could not, because their narrative in Delhi was more successful. They saw a change. And again, another very important point I want to bring: narratives ultimately cannot be faceless in nature. A narrative has to have a hero, a narrative has to have a villain. If there is no hero in your narrative, if there is no villain in your narrative, then your narrative cannot work. So I want to see if this perspective resonates with you. That narrative is about gamification of our predilection to search for truth. To an extent. नहीं, To an extent. ये gamify कर रहा है ये. To an extent. I agree with sir to an extent. So, अगर हीरो नहीं है, अगर विलन नहीं है, अगर इमोशन जो हमने बात की, पहले हमने बात करी इमोशन की, अब हम बात करेंगे अगर हीरो नहीं है, विलन नहीं है, तो नैरेटिव नहीं चल सकता. It cannot be a successful narrative. Tell me one narrative which does not have a hero, does not have a villain, and has been a successful narrative. I can give this to you in writing. It is not possible. It is not possible. If you need to have a new narrative, you need to have a hero. Either the hero who existed in the earlier time, you need to make that hero a villain, or you get a new hero, or have an invisible villain. Because if the narrative does not create either of emotion of hope, emotion of fear, emotion of helplessness maybe in certain part of the, or emotion of conviction of confidence which is there. But if you ask me, the two latest emotion which come near to me for a narrative is either a hope or either a fear. Everything else is a subsidiary emotion. Everything else is a subsidiary emotion. आप चैलेंज करता हूं, मुझे बता दो इसके अलावा कोई भी, मैं आपको हर नैरेटिव को होप फियर के ब्रैकेट में डाल सकता हूं. हर नैरेटिव में जो सक्सेसफुल है उसमें हीरो और विलन आइडेंटिफाई कर सकता हूं. और जिस नैरेटिव में सक्सेसफुल नहीं हुआ है उसमें ना हीरो रहा है ना विलन रहा है. हीरो होगा तो विलन तो होगा ही, तो या तो हीरो ढूंढ लो या विलन बना दो अपने नैरेटिव में. ऐसे नहीं बोलो, सच में बनाओ. और वही पिक्चर हिट हुई है, स्क्रीन पे भी वही पिक्चर हिट हुई है जिसमें कोई हीरो था, कोई विलन था. किसी चीज से लोगों को डर था या किसी चीज के बारे में लोगों को होप था. या तो व्यक्ति आखिरी में रोया, घबराया या खुश होया. और पब्लिक लाइफ के नैरेटिव में तो हीरो होना चाहिए, विलन होना चाहिए. अब ये सब चीजें भी नहीं काम करेगी अगर किसी व्यक्ति ने समवन जो आपके दिल में बस गया. आप किसी को भी हीरो बनाओ, किसी को भी विलन बनाओ, पर अगर वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और आपके वोटर के दिल में बसा हुआ है, वो आपके व्यूअर के दिल में बसा हुआ है, तो आप कुछ भी कर लो, कितने भी तिकड़मबाजी मचा लो, whatever you do, it will not work. And when it's like, अगर आपकी माताजी या पिताजी के बारे में कोई भी स्ट्रेंजर आके 10 बातें बोल दे, पर आपको पता है कि वो आपके साथ सुख और दुख में खड़े हुए हैं, आपको पता है कि जीवन के कठिन संघर्ष में वो आपके साथ खड़े हुए हैं, तो आप कोई भी कुछ भी बोल देगा, आप अपने रिश्ते को नहीं तोड़ोगे. क्योंकि वो आपके दिल में बसे हुए हैं. इसी तरीके से अगर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बहुत साल तक मेहनत करता है
और अगर वो एक वोटर के दुख में उसके साथ खड़ा होता है, और अगर वो देश का मान सम्मान का ख्याल रखता है, तो एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू दैट आप कितना भी हीरो बना दो, आप कितना भी विलन बना दो, क्योंकि वो व्यक्ति वोटर के दिल में जुड़ा हुआ है, उसने उसके दिल, उसके जिंदगी में बदलाव देखा है, उसने चेंज देखा है, तो वो कभी भी आपके नैरेटिव ऑफ हीरो विलन से नहीं चलेगा। पर ये एकदम से नहीं होता है, ये एकदम से नहीं होता है, ये समय लेता है, ये समय लेता है। और इसीलिए जो लीडर्स दिल में बस जाते हैं उनको हटाने में बहुत समय लगता है। तभी लीडर्स जो 10-10, 15-15 साल हिस्टोरिकली इस देश में रहे थे, या तो उनके सामने कोई दूसरा कॉम्पिटेंट लीडर नहीं था, या तो उनकी खुद की गलती से घमंड उनमें आ गया और दिल से हट गए। अगर आपके पिताजी या माताजी आपको 24 घंटे मारे हैं और आपके साथ बदसलूकी करें, तो आपका खून का भी रिश्ता होगा, तब भी आप जो है अपने आप को दूर कर लोगे, भले वो आपके दिल में तब बसे थे, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका एक्ट आपको उनसे दूर किया। ऐसे ही अगर एक लीडर दिल में भी बसा हो एंड दैट गाय, उसको घमंड आ जाए, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन इमरजेंसी। शी वाज सो पॉपुलर, शी वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर, बट that power made her take the historically, I would say, the worst decision taken by one of the most popular leaders at that time, and the public at the end of the day gave an answer. So अगर पब्लिक लाइफ में जा रहे हो तो दिल में जुड़ो। एक बार में नहीं लगेगा, एक बार अगर आपको पोजीशन मिल जाए, इफ यू गेट अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ऐसे मत जाने दो, ऐसे मत जाने दो, उसको यूटिलाइज करो दिल में आने की। एक बार दिल में बस गए, एक बार दिल में बस गए, तब आपको कोई भी टूल किट, किसी भी तरीके की, कोई भी नैरेटिव, कोई भी कुछ भी मैं बोल दूं, कोई भी कोई कह दे, आपको जनता के माइंड से कोई नहीं हटा सकता। इफ यू आर स्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ नीड ऑफ द पब्लिक, दिस इज वेयर all what I have taught you will fail, all whatever I say will fail. This is, I am only talking this specific incidents only of public life. I am not talking about media journalism, because it is clear कि एक समय जब आदमी को राजेश खन्ना से प्यार था, उसके बाद अमिताभ बच्चन का भी आया, अमिताभ बच्चन के बाद लवर बॉयज भी आए, लवर बॉयज के दूसरे बॉयज भी आए, बट मैं पब्लिक लाइफ में बात कर रहा हूं कि अगर आप जनता के साथ खड़े हो गए और उसके दुख में खड़े हो गए, और उसके सामने ऐसा कोई लीडर नहीं है जो उतनी मेहनत और उतने दुख में खड़ा हो, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। ये इंपॉर्टेंट चीज है। Why did Indira lose after emergency? Because there was a Jayaprakash Narayan who had the same credibility in the mind of the people, and when that Jayaprakash Narayan said that Indira सिंहासन खाली करो, if I'm not wrong, लोगों को रिलेट हुआ। तो भैया अगर आपका ऐसा कोई उसका आपके सामने कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आपने काम किया है, आपकी गलती भी जो है माफ कर देते। पर अगर घमंड आपके सर पे सवाई हो गया, एरोगेंस रीचेस हियर, इफ ईगो रीचेस हियर, यू आर डन एंड डस्टेड। फिर आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को हायर करने की, कंसल्टेंट को, किसी को, आप खुद ही निपट जाओगे। दैट्स द रूल। एंड विद दैट आई थिंक आई एम डन। We want some questions also. We will have a question. Yeah. So that's what I can say. So at the end, before the question, you can ask as much questions as you want. Whatever I have taught you will fail at this scenario. That's it. और एक और चीज, people see through things. Whatever it is that people see through things. Just remember, if your narrative does not have a conviction, eventually people will see through it. I have not seen more smarter, wiser people than the people of this country. That is why you look at the map of India. This map of India, every state, the map keeps on changing in terms of which party it is voting, which it is what voting. But at the same time, at the center, this map keeps on remaining same. It's not now. It's not a phenomenon which has happened now. Look at post-independence also, when everybody was saying that India will no longer be a democracy. How? Not because of netas and all, because of the people. Only because of the people. There is something which unites all of us, something which connects all of us. It's sitting in this room, wherever in this part of the country, and that energy is Bharat. So don't fool them. They will eventually double check you. Thank you. Ask as much questions as you want. Yeah, Pratham, we'll go in order because so Tum and then Pratham. As you said Your that, name, introduce yourself and then. so my name is Shubhan.
उड़ीसा से पापा. So as you said that narratives cannot be destroyed or demolished, but then you also No, narrative cannot be destroyed or cannot be demolished or creative if you are in the hearts of the people of the country. But then you also said that the utility of narratives can be demolished. So how to do that? Like for example, I will give you an example. Right now there is a in the manifesto of BJP they have UCC as their core agenda, but the entire narrative behind the UCC is it is against the Muslims. This is what the entire ecosystem is about. So how to destroy, how to demolish that? It's actually, see, that narrative can work, is going on the media, but in the mind of the voter, I have not seen that at all as a narrative. Voter right now is only about, voter for per se, that is not a narrative which is there. एक से न्यूज़ खबर, दे ट्राइंग टू, कल को यूसीसी लाए, उसमें विभाजन हो, कोई मना करे, आए, उसके नाम पे वोट मांगे, तो बात है. ये तो एक सब पार्ट है मैनिफेस्टो आजकल के. इसमें मैं तो कहता हूँ पार्टीज को मैनिफेस्टो देना, ये सब करना छोड़ देना चाहिए. कोई नहीं उठा के, अगर ये मैनिफेस्टो के बारे में पार्टीज इतना सीरियस होती हैं तो उनको अपना मैनिफेस्टो पहले रिलीज करना चाहिए, उसके नाम पे वोट मांगना चाहिए, और उसका वो कितना मैनिफेस्टो डिलीवर होता है कितना नहीं करना चाहिए. उनको भी पता है कि मैनिफेस्टो कोई नहीं पढ़ता, आखिरी समय पर ला के कर देते हैं. सो रादर देन दैट, the tragedy is basically that all these manifestos have only become documents which are half read by the people. It is so lengthy documents which are there, and only intellectual people like you read it. For the common public, yeah, it is ultimately big narratives itself. क्या लोग ने, for example, 2014, if I want to summarize it, why did people vote? People changed the government because they were tired of a perception of negativity and corruption, and the Prime Minister Narendra Modi generated hope. That is the essence of it. And then from 14 to 19 there was delivery, and on delivery he came in 2019. All the parts of the manifesto are then completed which are there. अब छोटी छोटी चीज़ें भी उसमें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं, मोटी मोटी करके. तो मेरे हिसाब से भी वो नैरेटिव है ही नहीं यूसीसी का. उसको डिमोलिश आप कैसे कर सकते हो? उसको डिमोलिश अगेन इट डिपेंड्स. लेट्स से अगर यूसीसी का नैरेटिव इज कि भाई इट इज एंटी मुस्लिम इन नेचर, राइट? नाउ से समथिंग टू डू विद दैट. This narrative takes a lot of time to demolish because it has a historical, you have to see a historical background to it. So the lot of intelligentsia in this class had, across their politics or their intelligentsia survives on, say, bracketing one of the parties as an anti-Muslim party, right? Now, if the Muslim intelligentsia comes in and counters that UCC is nothing to do with one faith, it is ultimately there in the constitution, it is again with the spirit of the constitution, and is fine. That can again be demolished. Ideally, that gets demolished when, say, UCC is challenged in the Supreme Court, and the Supreme Court says that it is nothing against the constitution of the country. When the Supreme Court says that is when eventually that narrative will be busted. Otherwise, it will keep on going. In general, how to demolish it? आप नहीं कर सकते. No, not about UCC one, but in general, if we want to demolish a narrative or reduce its utility, now how to do it? Have facts, reduce its utility. See, again, if you want to demolish a narrative, you individually cannot, but narratives can only be demolished when the facts which are presented, those facts ultimately speak for themselves. So say Rafale, for example, was a narrative which got demolished when two big events took place. There was when the Supreme Court said that there was nothing improper, or there was nothing, there was no element of quote unquote corruption in the Rafale deal. So that was the final authority which people believe as the final authority. And number two is when the mandate of 2019 came. So there were two things. A, the final adjudicator said that there is no element of corruption. Number two, the people also said that for us, Rafale was not a part of corruption. So that is how it gets demolished. So either it will be demolished by when you present facts, either in the court of the public, or apart from the court of the public, in the court of the Supreme Court. That is when I have seen particularly these political narratives being demolished or not demolished. Now tomorrow, let's say, after 5 years also there can be an inquiry which can be ordered, right? And then there are new facts which are presented, then it can also build in. So that is where I said there is no permanent, in public life there can never be permanent demolition of narratives, or permanent demolition of narratives cannot happen. आज मैं बात कर रहा हूँ 1984 के सिख राइट्स के, उसमें कितने साल तक कोई बात ही नहीं चीज़ हुई थी. अब जाके फिर देन आफ्टर दैट एटलीस्ट देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ कमीशन, देयर वाज थिंग्स. बट अगेन एज आई सेड, हैज इट अचीव्ड एनी कंक्लूजन? सज्जन कुमार गॉट बेल रिसेंटली, बट ही वाज सो बिकॉज फैक्ट्स इतने पुराने हो गए, एविडेंस इतने पुराने हो गए, तो वो एक प्रोसेसरल चीज़ है. बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आइदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चीज़ जाए,
या आप पब्लिक कोर्ट के अंदर जाओ तब जाके जीतते। कई लोग होता है जिनको सुप्रीम कोर्ट से भी जेल मिलती है पर पब्लिक कोर्ट के अंदर वो मसीहा कहलाए जाते हैं। जयललिता फॉर एग्जाम्पल एट अ टाइम was in jail in lot of disproportionate asset cases. When she came out for public, she had done so much good work and she came back with humongous majority. So as I said, if you are in public life, what matters is what you do for public. Public life का for example, P for public life, P for public, बस और कुछ नहीं, simple रखो, PP formula. What's the most powerful narrative that you have come up? Where in like, Anywhere. see for me the most Your experience. most powerful narrative for me was what 2014 narrative I have seen at least as the most powerful narrative, and then Obama when he came to power, those are two very very powerful narratives for me, very very powerful narratives. And in fact even when Kejriwal came to power in Delhi for the first time with 67 odd seats, that was also a very very powerful narrative for me, which had I would say which had really got the imagination of the people. So 2014, if you want me to rate, 14, Obama, third comes the Delhi narrative. Because those had no historical parallel. That is how. और किसी को सवाल पूछिए। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्रूटफुल वर्कशॉप। सर आप आपने अच्छी बात है, मैंने देखा कोई सोया नहीं था, बस सर थोड़े से बीच में थोड़े से जो थे वो कुछ मुझे चाह रहे थे। सर आपने एक जगह मेंशन किया था हीरो विलन वाले पार्ट में इनविजिबल विलन, तो एक तो इसका कुछ एग्जांपल व्हाट इज आप देखो ना, ये जो आप इनविजिबल विलन एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं आपको, लेट्स से ये जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं ना, नहीं सॉरी, लॉबी, कहाँ है ये लॉबी? किसने देखी है लॉबी? कहाँ घूमती है लॉबी? कहाँ आपके सामने आई लॉबी? किधर किसने देखी? क्या ये लॉबी शब्द का जो आप प्रयोग देखते हैं ना, लॉबी, एस्टैब्लिशमेंट, इकोसिस्टम, ये इनविजिबल हीरो है। आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द लॉबी, ये लॉबी ने देश को ये करा वो किया। देखा आपने कभी? मैं तो बताया नहीं, हर तरफ से लोग कहते हैं ना ये। And then heart of the people आपने बताया, for example if you took the example of नरेंद्र मोदी, I guess अभी के current scenario में वो perfect example है उसमें, लेकिन सर कहीं ना कहीं वो भी तो narrative के basis पे like 2014 में नैरेटिव पे आए, 2019 पे लोगों ने डिलीवरी देखी तो डिलीवरी पे वोट किया। अब लोग ने 10 साल में देखा है, लोगों ने 10 साल में उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी देख लिए, अलग अलग तरीके से देख लिए। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं इतना हंस रहा था इस पर, एक नैरेटिव करा गया कि G20 के ऊपर भाई इतना पैसा क्यों खर्च किया गया ना। मैं एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था, मैंने बोला क्या लग रहा है इतना पैसा ऐसा खर्च कर दिया G20। और मैं ना अपने नैरेटिव और अपने दिमाग की थिंकिंग को मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि मैं कॉमन मैन से ज़्यादा बात करके करूँ, क्योंकि दैट इज़ द मोर रिलेटेबल। मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स को देखा है कि जब भी उनको कुछ चेक करना होता है ना, वो लोगों से ज़्यादा बात करते हैं, उससे फीडबैक लेते हैं, तभी आदमी हमेशा रूटेड रहता है। और वो लीडर्स निपटते हैं जो अपने आजू बाजू जनता का फीडबैक लेना छोड़ देते हैं, जब वो पीपल इंटरेक्शन छोड़ देते हैं तो आपका डिमोलिशन चालू हो जाता है। कोई भी एकदम से नहीं हटता, निपटता है, जीतता है, समय लगता है हर चीज़ का। तो मैंने उसने मुझे बोला, अरे बताओ भैया कैसी बात करते हैं लोग, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आए तो हम सब उनकी इतनी खातिरदारी करते हैं कि नहीं करते हैं। मान लो कि बड़े विदेश से कहीं से भी मेरे घर पे मेहमान आए, मान लो मेरे गांव में कोई व्यक्ति दूर से आ रहा है और घर पे आ रहा है खाने, तो मैं अच्छे पकवान तो बनाऊंगा ना और अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी करूंगा। तो अब अगर देश में इतने सारे दुनिया के लोग आ रहे हैं, लीडर आ रहे हैं, तो हम खातिरदारी क्यों नहीं करेंगे? हमारे देश की बात है, जब घर पे खातिरदारी कर रहे हैं तो देश के अंदर आ रहे हैं, वो तो हमारा घर है। तो ऐसे लोग सोचते हैं और सही, मतलब इसमें लॉजिक है। इसीलिए ये सब नैरेटिव जो होते हैं ना, टेक्स्ट बुक नैरेटिव कितना ग्राउंड पे चलता है वो तभी आप समझ पाते हो जब आप ग्राउंड से कनेक्टेड हो, जमीन से कनेक्टेड हो, जमीन से कनेक्टेड रहो। 2014 में जो अच्छे दिन वाला नैरेटिव था, स्टार्ट कहानी वहीं से हुई वैसे। हाँ, वो उसका वैक्यूम था, उसीलिए अब 19 में थोड़ी, 19 में तो लोगों ने देख लिया कि काम किया है। और 2024 में मोदी वर्सेस हु, लोग कंफ्यूजन पे कभी रिलेट नहीं करते। या तो लोग बहुत त्रस्त हो जाते हैं एक लीडर से, तो बोलते हैं यार कोई भी खड़ा हो जाए हमको फर्क नहीं पड़ता, इसको नहीं चाहिए। वो अभी सिस्टम नहीं है ग्राउंड पे, तो इसीलिए ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो भी इस बात पे लड़ रहे हैं कि somehow get the BJP less than 270, that is their real strategy.
So if they get it less than 270, then they will know that they are in the game eventually. And BJP knows that it has to come in majority. So this is the real fight in 2024. It will be an interesting election. Yes, sir. प्रधानमंत्री जी ने प्रीवियस से रेवड़ी कल्चर कहा, इस कल्चर को कैसे तोड़ा जाके यार अब देखो यार, मैं इस पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि अब हर नेता स्टेट लेवल पे क्या क्या नहीं कर रहा है, आप जाके खुद काट के खुद देख लो कि मतलब कहाँ क्या क्या नहीं कर रहे हैं स्टेट लेवल पे अक्रॉस पार्टी लाइंस। अभी मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव आ रहा है, आप लोगों के देख लो। मैं सर क्या बोलूँ आपको, चीज कर लो तो या तो सब निर्णय ले लो मिलके कि नहीं होना चाहिए यार। अच्छा मुझे बताओ, देखो मैं इन एसेंस के उसके जो कहा गया उसके पक्ष में ही हूँ, कंप्लीटली पक्ष में, कि फ्री भी नहीं होनी चाहिए। अब हमको ये कैटेगराइज करना है कि क्या जनता की सुविधा है और क्या रेवड़ी है, और ये जो है ना एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। इसको आप कोर्ट वोट से सोचोगे कि ये रिस्ट्रिक्शन आएगा, ये सब बड़ा मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनता जिस चीज को रिजेक्ट कर दे, जहां जनता ने फ्री को रिजेक्ट कर दिया, वहां किसी नेता में ही नहीं दम होगा फ्री को करने के लिए। अल्टीमेटली पीपल्स कोर्ट में ही हो ना। सो दिस इज व्हाट आई फील। मुझे अब मैं आपका एग्जांपल देता हूं। 2019 के पहले कांग्रेस लेके आई थी न्याय, या हम कुछ एक्स पैसा सबको दे देंगे, राइट? पीपल रिजेक्टेड इट कंप्लीटली, है? So only people can do it. For a politician, only people can do it. So उसको रिजेक्ट आप में नहीं कर सकते, वोटर रिजेक्ट कर सकता है। तो जब आप वोट देने, जब आपको लगता है कि फ्रीबी के खिलाफ, तो करो। मैं कह रहा हूँ अल्टीमेटली कस्टोडियंस ऑफ दिस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन क्या कहते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेट द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड। यही वी द पीपल। इस समय में एक समय पे देयर वाज people used to call 26/11 also as some XYZ साजिश, right? Not even able to name RSS साजिश, not even able to name RSS की साजिश बोलते थे जब लखवी और पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व था। और आज ऐसे आज लोगों ने उन सबको ऐसा रिजेक्ट कर दिया है कि वो तो ऐसा बोल नहीं सकते। और तो ये सच्चाई है। लोगों आप अपनी बात को लोगों के बीच में ले जाओ, लोगों को कन्विंस करो, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। यही है, आपको निर्णय करना है कि आपको लोगों के बीच में जाना है कि जाना है। और पर्सनालिटीज ही, अगर आप नरेंद्र मोदी एज अ पर्सनालिटी कुड गेट बीजेपी टू पास, ऑलवेज इट इज अबाउट पर्सनालिटीज फॉर श्योर, इट इज अबाउट इन एनी फील्ड। So you also mentioned that जैसे आपका narrative है, there's a counter narrative that your opposition is Yes. also building, right? For example, on Hindutva, you saw Rahul Gandhi also do temple hopping or generally on his shirt and all that. How do you adapt to such things, right? When you know that the opposition is also evolving, क्योंकि आपका narrative बन नहीं रहा है और बनने के पहले So he started to do it before. So he started to do it before Gujarat. So before Gujarat, there was at that time real anti-incumbency in Gujarat elections, and so this is what happens with people who are, see, those who travel on the ground and who have experienced this country, they're able to carry forward narratives. Those who are very textbookish in nature, theoretical in nature, they are not able to always gauge क्या चल रहा है. So that was, उसमें आपने चालू किया, आप जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए, पूरा चीज़ हुआ, and Congress did very well. It was Narendra Modi who saved the Gujarat elections for the BJP, Narendra Modi, Amit Shah. Otherwise, Congress gave a very good fight. And so you had a lot of patidar agitation, this, that, everything was going on. ये हुआ, उसके बाद में आप भूल गए उस चीज़ को, तो फिर जब लाके लोग, तो दूसरा आपका लोगों ने तो वही बोला ना कि आप तो चुनाव के पहले ही बने, बट वहीं से फॉर एग्जांपल ऑफ योर ओपोनेंट, दैट ओपोनेंट इज कंसिस्टेंटली देयर। तो अगर आप जेन्यू बनते तो या तो बनते उस नैरेटिव को नहीं लेके आते, या लाते तो अक्रॉस लेके आते। उसके बाद आपने ऐसे एक्ट्स करे जिसमें आप खुल के बोल नहीं पाए। से फॉर एग्जांपल उदयनिधि स्टैलिन स्टेटमेंट, आई डोंट थिंक इन any sane person can endorse that. Any sane person cannot endorse it. But you could not speak, even condemn that. So then people believe that आपका अपने आप ही वो narrative die हो जाता है। तो जब आपके narrative में conviction नहीं होगा ना, और वो narrative जब consistent नहीं होगा, तो नहीं चल सकता। So you have to have a narrative that two type. One is only to do with elections, but say narratives to do with your identity. When you say that you are a Janeudhari Brahman, when you say that you are proud to be a Hindu, whatever you say, and if you don't believe in it, then it cannot be consistent. And if it's not consistent, it dies. Automatically it dies.
सो आप ये मत सोचो कि कोई भी सच्ची या झूठी चीज़ जो है वो हमेशा चलेगी, कुछ नहीं हो सकता। हर चीज़ की चीज़ धीरे 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 करके ना, कहते हैं एक कहावत है कि सत्ता कभी भी ना घुंघरू पहन के नहीं आती है, जाती है। टू से दैट यू विल नॉट, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स, यू विल नॉट बी नोन कि जैसे होता है अरे पाँव में हट जा रही है जा रही जा रही करके। यू व्हेन यू आर सो मच एट द टॉप इन एनी पार्ट, नो यू आई हैव सीन दैट पीपल इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, they somehow start to not look at glaring problems which emerge. When you don't look at glaring problems which emerge, then ultimately you manage, you control damage. So it's like ऊपर everything is good, but नीचे नीचे you start feeling कि यार दिमाग बढ़ता जा रहा है, धीरे बढ़ता जा रहा है। तो एक समय जब अटैक करते हैं तो आपको अरे यार इतनी सारी दिक्कत थी। That's exactly what happened with the Congress. Because change, it is constant. So that's where feedback loops are very important. Why do you think India has been late in appreciating the role of narrative? No, I think with social media's emergence, it has become a world has become where information is not controlled by only a selected few. Earlier, the power of information and power of actual Article 19, which was there, people could not communicate that effective. People did not have the tool to communicate. But I'm talking globally, like India is still not there in the game. We don't invest on foreign media. We don't invest. That you should ask our leaders. That we always try to get solutions which are very temporary in nature. We are like जुगाड़ जो होता है ना, जब तक आप लोगों को बिल्ड नहीं करोगे, लोगों में विश्वास नहीं करोगे, तो आप जो बात कर रहे हो फॉरेन मीडिया, आर इंस्टीट्यूशंस competing with the Harvards and the Stanfords, these are all long-term investments which are there. You need to do that. That only the people who are at the helm of affairs across fields can answer. Which is where, that is the difference between our society and the American society. This is what we should learn from them. They have become, say, innovation capital. They have maximum companies in Fortune 500. Chinese government at times supported their companies in the initial part to come into Fortune 500. Now more than 100 Chinese companies are in Fortune 500. Many of them, American companies are by Fortune 500, where founders do not have any family legacy behind it. So that is where the ecosystem and opportunity is there. In India, that is where that markets, our culture system has to really evolve. Because if we don't, risk capital is very low, and this is where our startups are doing very well. We have now the world, we defeated China in terms of startups, but in terms of profitable businesses, people reaching into Fortune 500, supporting people, believing in them, all of these which you're talking about, foreign media, this, that, all of that requires huge investments, huge investments. And particularly in the field of media, you need that support. Do you think it also has to do with the fact that Our mindset has to we have a change. culture of this inward looking? That's where how you find through. See, we were always in a culture of not being proud of our identity. We were all, Macaulayans in a different skin. We stopped looking inwards, actually stopped looking inwards in what we have. We started to think that science and religion is completely different. Our scientific man, we started to believe in the bogus Western theories that a scientific man cannot be religious in nature. It took a Somnath to perform a Chandrayaan 3 lead and still go to a Somnath temple to say that I am a scientific man, but I can still be religious in nature. So we are the most, if I read about us as a civilization, I have not come across any more scientific civilization which can lead the world than ours. These people in the West talk about raps. You look at how our rappers are rapping, our Shiv Bhajans and others. It is of a different magnitude. I see talent across in every part of this country. It needs opportunity. Issue हिंदुस्तानियों में क्या होता है, एक दूसरे को ही काटते रहते हैं. जब तक हम एक दूसरे को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक चीज़ कैसे चलेगी. हमको एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम भी बनना है, साथ में कॉम्पिटिटिव के साथ में. अगर हमारा एक इंस्टीट्यूशन मान लो भारतीय वे ऑफ थिंकिंग को आगे लेके जा रहा है, तो अगर उसने अपने पैसों पे, अपने पैरों पे इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एज पीपल एट द एस्टैब्लिशमेंट एंड अदर्स, कि हम उसको एक्स लेवल पे स्केलिंग करें. सो इट नीड्स कोलैबोरेशन एंड दिस इज वेयर आवर थिंकिंग हैज़ टू चेंज. हम लोग की थिंकिंग इसमें बहुत चेंज होने की ज़रूरत है. अगर हम लोग लिटरली अमेरिकन एंड चाइनीज़ के साथ compete करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, बट वी हैव टू स्टिल लीपफ्रॉग. We are definitely moving towards that direction. Move that for you to sit, or
Yeah, after I'm done, I'll sit. Yeah. Done? Thank you so much for not sleeping and enjoying it.